Good evening. Namaskar, Savika. I, Dr. Vaibhav Pathak, welcome you all on behalf of Endocrine Society of India to this Facebook Live program. Each Saturday at 4:30 p.m., we bring a relevant topic which is important for your health. And in continuation of that, in the month of April, we will be focusing on heart health and its connection with the hormones. So, to begin with, the first topic for today's is the connection of heart with the hormones, and we will focus on the few basic important aspects of what is the connection of heart with the hormones. And to take us through this important topic and to help us gain insights into this topic, we have some experts lined up from each part of the country, from east, west, north, as well as from the uh, east part of the country. So let me introduce by welcoming Dr. Abhyuday Verma sir. Sir is the Associate Professor in Endocrinology at Index Medical College, Indore. A warm welcome to you, sir. Our second panelist is Dr. Kaushik Biswas sir. Sir is the Senior Consultant Endocrinologist at Medica Super Speciality Hospital, Kolkata. A warm welcome to you, sir. Our third panelist for today is Dr. Praveen Kumar. Sir is Consultant at NS PK Super Speciality Hospital in Department of Endocrinology at Mysuru. And our last panelist for today, that is the sir is the Salam Ranveer sir. Sir is consultant endocrinologist in Department of Endocrinology at Medicine at Imphal, Regional Institute of Medical Sciences, Imphal. A warm welcome to you, sir. So today's topic, as we all know, we'll be focusing on heart health and its basic connection with the hormones. And in whole of this month, we'll be focusing on different hormones which do play an important role in keeping our heart healthy, and the diseases, whether it can be high hormone level or low hormone level, they will have an impact on our heart health. So let me introduce the topic, and let me begin by asking a very basic question, because all of our audience must be aware about heart, that what is heart, because heart is a healthy heart is necessary for us to uh, live a healthy life. And what is the hormones basically, most of our audience may not be aware about the word meaning of the hormones. So let me begin by asking Dr. Abhyuday Verma sir, can you please explain to our audience what is hormone? Yes. Thank you, Dr. Vaibhav. And at the outset, I like to thanks Endocrine Society for initiating such uh, good interactive sessions for public awareness. और जैसा वैभव आपने बताया कि हार्ट के बारे में सबको पता है, बट हॉर्मोन्स का लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो दैट व्हाट आर हॉर्मोन्स, है ना. बिकॉज अभी तक हम जो भी बातें करते आए हैं, पीपल दे टॉक अबाउट हार्ट हेल्थ, है ना, किडनी हेल्थ और बोन हेल्थ. तो ये सारी चीजें एक एक यू कैन से कि दे आर क्वाइट स्पेसिफिक और एक ही ऑर्गन होता है. बट हॉर्गन्स हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें तो हॉर्मोन्स आर बेसिकली केमिकल्स जो एक स्पेशलाइज्ड ग्रंथियों से, जैसे जिन्हें एंडोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं, उनसे ये समय समय पर जैसे भी शरीर की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से वो सीक्रेट होते रहते हैं, है ना. ये सीक्रेट होकर हमारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड से या तो फिर ये किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्रंथि के ऊपर असर करते हैं या फिर दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स, है ना. जैसे आप अगर हार्ट बोले, हार्ट पे भी हॉर्मोन्स, किडनी, बोन्स, लिवर, हर जगह ये हॉर्मोन्स जो एक केमिकल मैसेंजर्स के जैसे रहते हैं वो ब्लड के थ्रू इन सारे ऑर्गन्स पे पहुंचते हैं. सारे ऑर्गन्स का वर्किंग पैटर्न इज डिपेंडेंट अपॉन दीज हॉर्मोन्स. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हॉर्मोन्स जो हैं
लोगों में भ्रांति रहती है कि ये क्या एक कौन सी ग्रंथि है, कहाँ पाया जाता है। तो ये ग्रंथि नहीं है, हमारे ब्लड में एक ऐसा केमिकल है जो सारी ग्रंथियों को कंट्रोल, उनकी व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। करीबन 50 टाइप के डिफरेंट हॉर्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। जिनके ज्यादा होने से या जिनके कम होने से हमारे बॉडी के काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर असर पड़ता है। जैसे मेटाबॉलिज्म हम बोलें, रिप्रोडक्शन बोलें, हम महिलाओं के मेंसेस बोलें, है ना, वजन घटना या बढ़ना, ब्लड प्रेशर का घटना या बढ़ना, हार्ट हेल्थ, लिवर की जो है शुगर, ये सारे जो है कहीं ना कहीं जो है वो सारे हार्मोन्स के द्वारा ही संचालित होते हैं। तो हॉर्मोन्स का अगर हम देखें तो हॉर्मोन्स आर, ऐसा कहें हम कि बेसिक रीढ़ की हड्डी है सारे ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। थैंक यू सर। सो जैसा कि सर ने हमें बताया कि एक ऐसे कह लें कि अगर हमारा एक ऑर्गन या ग्रंथियां हमारे दूसरे ऑर्गन्स को एक संदेश भेजना चाहती हैं तो वो हार्मोन के थ्रू भेजती हैं। तो विभिन्न तरह की ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में जिसके बारे में हम आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे और उस पर हम ये भी फोकस करेंगे कि इन सारी ग्रंथियों का हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से क्या कनेक्शन है। एंड इन कंटिन्यूएशन विद दैट एंड continuing the discussion, my next question is to Dr. Praveen sir. Sir, as Dr. Avyudev sir has already mentioned that how important hormones are for us, and so which are the important hormones which are there for us to keep our heart healthy? Thank you, Dr. Weber. At the outset, I would like to thank Endocrine Society of India for this opportunity. Initially, I will spend 1 minute how heart functions. Heart has two parts: the right side, which receives the blood from the body, whole of the body, and then it pumps the blood to the lungs to oxygenate it. Then it is received from the left side of the heart, from where it is pumped throughout the body through a specific vasculature. तो इनमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट का राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, एंड देयर इज वैस्कुलेचर सिस्टम थ्रू विच इट पंप्स आउट। तो heart is a specialized muscle. It has its own nervous network which happens to contract rhythmically. It contracts about 1 lakh time every day, and it has its a specific rate of contraction based upon the situation, the demand of the body. And this happens with nervous system as well as with the hormones. So it happens both together to have the final homeostasis. The normal sthiti बनाए रखने में nervous system and hormones play together. The most common one which we all know is insulin. So insulin is secreted from pancreas. वो क्या करता है? ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, तो हार्ट कीप्स फंक्शनिंग एट इट्स एफिशिएंट वे, thereby it keeps producing energy so that heart functions throughout. And second thing, so then it will be the thyroid hormone, which is most commonly known to everyone. The thyroid hormone influences both the contractility of the heart as well as the conduction network, and also finally it helps in the maintenance of the blood pressure. And then third will be the stress hormone, which a gland that is present above the kidney, which we call adrenal gland. We have this called stress response whenever a person is under physiological or physical, psychological or physical stress. There is a release of cortisol, there is a release of catecholamines. Based on that, our heart responds to that by coordinating the contractility and the rate of function. And finally, coming to the next or most commonly discussed is the sex steroids, that is estrogens as well as the testosterone. Both these will have an influence on the cardiac structure as well as the functioning. And nowadays we consider vitamin D as also an hormone, and which also influences the general well-being of the heart. थैंक यू सर। सो सर ने हमें बताया कि जैसा कि बहुत ही ज़रूरी और दो कॉमन बीमारियों के बारे में, कॉमन हार्मोन्स के बारे में बताया कि इंसुलिन जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी हमारे देश में आज देखी जा रही है, डायबिटीज़ की, शुगर की समस्या, और उसका भी संबंध, शुगर एक लाइफस्टाइल बीमारी ज़रूर है लेकिन उसका ज़रूर संबंध हमारे इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है और उसका हमारे हार्ट पर भी
बहुत ही महत्वपूर्ण असर पड़ता है शुगर कंट्रोल नहीं रहने का। इसके अलावा एक थायराइड की समस्या जिसका कम होना, ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें भी हमारे हार्ट को असर कर सकती है, और कुछ और हार्मोन जिनकी समस्याओं के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, वो सारी हमारे हार्ट की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो now moving ahead to the next question is to Dr. Kaushik sir. Sir, as our two experts have already highlighted that what is hormone and which are important hormones for our heart to be healthy. So as we talk about hormones, सर ने बताया कि हमारा हार्मोन एक केमिकल है। तो अब सर केमिकल अगर ज़्यादा हो या कम हो, सो उसके बारे में हमें बताएं सर कि कैन बोथ हाई लेवल्स ऑफ दिस केमिकल और दिस हार्मोन और लो लेवल ऑफ दिस केमिकल और हार्मोन्स आर इफेक्टिव फॉर आवर हार्ट हेल्थ सर? Thank you, Boiva, for the question, and thank you, ESI, for organizing this beautiful event. We know that the relationship between diabetes mellitus and heart disease is well established. So I'll discuss the relationship between the other hormones and the heart. As you have told, that both the excess and the deficiency ज़्यादा होना या कम होना of hormones can lead to heart diseases. For example, like thyroid hormone excess, like hyperthyroidism, is associated with increased heart rate, uh, arrhythmias like atrial fibrillation, and increased systolic blood pressure. Similarly, the other condition, the opposite conditions like hypothyroidism is associated with decreased heart rate or bradycardia and decreased cardiac output and increased diastolic blood pressure. Similarly, other hormones we can consider, for example, parathyroid hormone excess can be associated with hypertension in some cases. Parathyroid excess can be associated with some bad effects on the vasculature. Hypoparathyroidism, on the other hand, because of the hypocalcemia, can be related to cardiac arrhythmias because of prolonged QT intervals. If you consider the growth hormone excess can lead to the heart failure in acromegaly, the left ventricular hypertrophy, hypertensions, and other diseases. The opposite condition, in growth hormone deficiency, we can again have problems with heart. If we consider the adrenal gland, the excess of cortisol hormone can lead to hypertension and other direct effect on the heart because of the cortisol excess. And cortisol deficiency is also associated with development of hypotension and even sometimes sudden death. And if you consider the other hormones secreted from the adrenal cortex, like mineralocorticoids, which is very much important for sodium and water balance, they are associated with development of hypertension when there is in excess, like in Conn syndrome. If you consider other glands like our sex hormones, both estrogens and testosterone are protective towards the heart. I'm not going into detail, but I'm just setting the context here, stopping here. Thank you. थैंक यू सर। सो सर ने हमें विभिन्न हार्मोन्स के बारे में बताया कि और एक किसी भी केमिकल के साथ है, अगर जैसे कि सर ने हमें एक केमिकल कहा हार्मोन को, हमारे अभ्युदय सर ने, तो कोई भी केमिकल कहीं भी अगर ज़्यादा होगा, कम होगा, तो वो दोनों परेशानियों का कारण हो सकता है। और कुछ हार्मोन्स के बारे में सर ने बताया, जैसे कि एक कैल्शियम का हार्मोन हमारे शरीर में जो कैल्शियम को बैलेंस रखता है, कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल रखता है, उस हार्मोन के बारे में सर ने बताया पैराथायराइड हार्मोन, जो कि कम होने पर भी हमारे हार्ट पे असर हो सकता है। जब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है और उस हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है शरीर में, तब भी उस पे असर पड़ सकता है। इसी तरह से स्ट्रेस हार्मोन के बारे में, जो कि बढ़ने पर या जो उस ग्लैंड से कुछ और हार्मोन निकलते हैं, उसके बारे में हम आगे चलते हुए ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे हार्ट को खराब करने में या हार्ट की प्रॉब्लम्स को करने में एक कारण बन सकता है। So now continuation with that, and one of the most important thing which is our patients also come with this problem of the thyroid hormones. And now I would like to ask my next panelist, that is Dr. Ranveer sir. Sir, how is heart health connected with the thyroid hormones, sir? So please unmute, sir, please. Sir, not audible, sir. Please unmute, sir. Am I audible?
Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. Now you can. Okay, thank you for the question. So we all know the importance of thyroid, and as already highlighted by Dr. Kaushik to some extent, when the gland is not functioning properly, when we call it hypothyroidism, जो gland का काम हार्मोन कम बनाते हैं, तो जब थायराइड हार्मोन कम होते हैं उस टाइम हार्ट का कंट्रैक्शन कम हो जाता है, तो दिल का धड़कन कम होगा। तो दिल का धड़कन कम होगा तो जो हर मिनट में जितना खून निकालना है, बॉडी को पंप करना है, वो कम हो जाएगा, और जो ब्लड वेसल का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम ब्लड प्रेशर में जो ऊपर में एक नंबर लिखा, नीचे में एक नंबर लिखा हुआ है, जो नीचे का नंबर को हम उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा कारण है कि थायराइड का हार्मोन कम हो जाता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ का जो क्लियरेंस है मेटाबॉलिज्म है, वो कम हो जाएगा। उसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से दिल का दौरा पड़ सकता है, लकवा मार सकता है। तो थायराइड कम होने से ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो और दूसरा और है कि जब थायराइड ज़्यादा होता है उसमें क्या होता है कि दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, और दिल धड़कन का जो रेगुलरिटी है उसमें भी एबनॉर्मल आ जाएगा। दिल का धड़कन जो धक 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 करता है वो धक 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 ऐसे करने जाएगा, मतलब एरिथमिया जो हम बोलते हैं, तो उसका रेट रिदम में गड़बड़ी हो जाएगा। तो उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन बोल के होता है, वो कॉमनली होता है। और जो वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स बोल के, जो नीचे का वेंट्रिकल, जो डॉक्टर साहब ने, प्रवीण कुमार साहब ने बताया था कि वेंट्रिकल्स होते हैं, जो वेंट्रिकल का उसका उससे भी दिल का धड़कन जो आते हैं उसमें भी खराबी आ सकती है। हम उसको वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बोलते हैं। और हाइपरथायरॉयड में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। तो ज़्यादा दिल का धड़कन ज़्यादा तेज होने से हार्ट फेलर आ सकता है, हार्ट फेल हो सकती है रेट अगर कंट्रोल नहीं है तो। इस तरह, और दिल का ज़्यादा धड़कन ज़्यादा तेज होने से हार्ट में जो ब्लड खून जाना है वो डायस्टोलिक बोल के, हार्ट का साइकिल में दो होते हैं, एक सिस्टोल जिसमें खून पंप करते हैं हार्ट से, और डायस्टोल में हार्ट में पंप ब्लड आ जाता है। लेकिन जो हार्ट का मसल है उसमें खून जाता है डायस्टोलिक पीरियड में। अगर हार्ट दिल का धड़कन बहुत तेज है तो खून नहीं जा पाएगा डायस्टोल में, हार्ट के मसल में। तो जो जिसका पहले हार्ट का बीमारी है, जो उसका अगर हाइपरथायरॉयड हो गया तो उसमें दिल का दौरा पड़ सकता है, एंजाइना प्रेसिपिटेट कर सकता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन जो हार्ट अटैक बोलते हैं वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। इस तरह थायराइड का हार्मोन कम होने से भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इनसाइट सर। सो ये हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है, और सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि जो भी थायराइड की समस्या है, जो विभिन्न तरह की समस्याएं हैं, इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ सकता है हार्ट पर, और ऐसे कह लें इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो डायरेक्ट इफेक्ट सर ने हमें बताया कि थायराइड हार्मोन कम है हमारे शरीर में तो हमारा मसल कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम सिकुड़ेगा, कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारे शरीर में आगे ब्लड जाने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इनडायरेक्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म के बारे में सर ने डिस्कस किया कि थायराइड हार्मोन अगर कम है तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसका आगे चलते हुए हार्ट पर असर पड़ सकता है, उसकी हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉकेज हो सकती हैं। प्लस सर ने ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत बताया, अच्छे से बताया कि हार्ट का जो कनेक्शन ब्लड प्रेशर के साथ है उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन कई बार थायराइड हार्मोन की समस्या बढ़ना या घटना दोनों हो सकता है, और वो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ के रहता है तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट हमारे हार्ट पर पड़ सकता है। और जो धड़कन हमारी, जैसे कई मरीज हमारे पास आते हैं धड़कन तेज होने की समस्या से, और कई बार धड़कन कम होने की समस्या से, और उनको जांच में पता लगता है कि थायराइड की समस्या निकली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है, जो कि धड़कन कम होना या ज़्यादा होना अल्टीमेटली हमारे हार्ट हेल्थ को एक इफेक्ट हो सकता है। सो इसके साथ हम नाउ मूविंग अहेड, नाउ our next question is to Dr. Abhyuday sir. Sir, as Dr. Kaushik sir has already given a hint about the gland, that is the adrenal gland. So lot of patients who come to our OPD with high blood pressure, and sometimes they are on lot of medicines, 3-4 medicines, and in spite of that their blood pressure is not controlled. So our audience would like to know sir, that in those patients who have high blood pressure and still not getting control on lot of medications, so can a hormone condition be a factor in those sort of patients sir? Yes, Dr. Vaibhav, very good question.
वी हैव लॉट ऑफ आर पेशेंट्स, है ना, जो 2 दवाइयाँ 3 दवाइयाँ ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। और जैसा डॉक्टर कौशिक ने, डॉक्टर प्रवीण एंड डॉक्टर रणबीर ने डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ऑर्गन्स का हार्ट पे क्या असर होता है वो बताया है, उसमें हमें सब में ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारे ऑर्गन्स जो है वो ब्लड प्रेशर पे जरूर असर कर रहे हैं, है ना। सो ऑल वट एवर यू टॉक थायराइड, यू टॉक एड्रेनल ग्लैंड जो अपने किडनीज के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि है, वेदर यू टॉक अबाउट दी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, या इनका कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर घटने या बढ़ने से कहीं ना कहीं इनका रिलेशन आता है। और ऑब्वियसली जब ब्लड प्रेशर बढ़ता या घटता है तो हार्ट पे डेफिनेटली उसका असर आता है। अब हम बात करेंगे एड्रेनल ग्रंथि की। तो एड्रेनल ग्रंथि जो है बेसिकली जो है कुछ 2-3 परतों में रहती है ना, जो उसमें एक अंदर जो है कॉर्टेक्स, मेडुला, ये सारे जो अलग अलग उसकी लेयर्स रहती हैं, इन लेयर से अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कैथेकोलामाइंस, एंड ये सारे जो हैं ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में जो है बहुत मदद करते हैं। तो कुछ बीमारियां जो स्पेशली होती है जहां मिनरलोकॉर्टिकॉइड नाम के हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन, या कैथेकोलामाइंस जो बढ़ते हैं, या सेक्स स्टीरॉइड्स जो शरीर में बनते हैं, उनकी अगर कहीं पर बनने में तकलीफ होती है या कहीं कोई स्टेप में कुछ रुकावट आ जाती है, तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ाने में जो है इनका हाथ होता है। तो बेसिकली इस प्रकार के ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन ना। जो रूटीन हमें देखने को मिलता है वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी जो होता है उसमें काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन का रोल होता है ना। दूसरे किडनी के कारण भी हो सकते हैं, दूसरे और कारण होते हैं, बट हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब हमें लगे कि 2 या 3 दवाइयों से ज्यादा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लोगों को अपना हार्मोनल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है। और जैसा आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट करा था कि एड्रेनल ग्रंथि जो होती है उससे काफी सारे, जैसा मैंने बताया, अलग अलग लेयर से हार्मोन बनते हैं। तो इन हार्मोन्स की जांच करना, उनका लेवल्स पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि ये ऐसे या हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर तो एक सिर्फ वार्निंग साइन होती है ना। अदरवाइज इन हार्मोन्स के डिसबैलेंस से बॉडी में दूसरे भी और जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है जो जानलेवा भी रह सकता है, और दूसरी भी तकलीफें हो सकती हैं जिसका ये एक वार्निंग साइन होता है। तो ब्लड प्रेशर में भी जस्ट अ वार्निंग साइन कि कहीं कुछ हार्मोन डिसऑर्डर हो रहा है, एड्रेनल में गड़बड़ी हो रही है। एड्रेनल हार्मोन्स को अगर हम चेक करें, उन्हें प्रॉपर बैलेंस में लेकर आए तो ब्लड प्रेशर भी बहुत अच्छा जल्दी कंट्रोल होता है, और उससे होने वाली तमाम हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, दूसरे टारगेट ऑर्गन्स को डैमेज को हम बचा सकते हैं। Thank you, sir. So, this is very important for our audience to understand that if you have a condition known as high blood pressure and you are following a proper dietary modifications, properly lifestyle changes, and you are taking your medications as prescribed by your physician regularly, and in spite of that, your blood pressure is not getting control, then there is a need to check about few hormones. And for that, you need to consult your endocrinologist that yes, I'm taking the medicines regularly as well as following a strict diet and exercise part along with that dietary modifications which is needed for blood pressure control. So you need few investigations to be done, few tests to be done, which would be able to rule out that whether you are having any hormone related conditions or not. And in that, as sir has already told us, that there are hypertension like essential which would be seen in 90% of the people, but 10% of the people out of 100, 10 people would have few causes of hypertension, few causes of high blood pressures, which we will be able to pick it by the hormone test. So the clue is
If your blood pressure is not getting controlled on 3-4 medications in spite of all precautions being taken, then you need to check your blood pressure. For that, you need to get your any consultation with your endocrinologist, who will be able to take care of any hormone related problems, if at all it is there or not. So thank you, sir. Thank you for the wonderful insight. And now moving ahead, we have discussed about lot of hormones. We have discussed about thyroid. We have discussed about adrenal gland. Sir has already discussed few parts about the calcium, and one most important hormone which is there in our body is the reproductive hormones, which is different in males and females. And it is an important hormone which does play a lot of role not only in reproduction and other things, but as well as to keeping our lot of organs healthy. So my next question is to Dr. Praveen, sir. Sir, are the reproductive hormones which are different in male and females, they are also responsible for keeping our heart healthy? Yes. Uh, Commonly, we think that these reproductive hormones are essentially meant for reproduction, but they have additional role. So when testosterone which is mainly produced in males, and estrogen and progesterone, which are produced in females. So estrogen has a protective effect on the heart and the vasculature. How do we know this? We know this because when compared between men and women less than age of 50 years, heart attacks or cardiac problems are more commonly seen in men than women. तो इससे हमें ऑब्जर्व किया कि women में cardiac protection रहता है. Females will have lesser risk of heart disease when they are less than 50 years. पोस्ट मेनोपॉजल जो उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, बाद में उनके हार्मोन्स कमियां होती है, बाद में उनके हार्ट अटैक का रिस्क मेल और मेल से equal होती है, और उसके साथ साथ एक्चुअली ग्रेजुअली होते ही उनका रिस्क के साथ सिवियरिटी भी बढ़ जाती है. तो वो कैसे होती है? ईस्ट्रोजन जो रहती है, हमारे कॉमन लैंग्वेज में बोले तो good cholesterol, bad cholesterol. So it tends to increase the good cholesterol, that is HDL, and reduces the bad cholesterol, that is LDL. And also it has additional benefit on the vasculature and the cardiac functionality. So antioxidant property रहते हैं, and injury हो तो fibrosis, anti-fibrotic property, वो सब additional will be seen with estrogen. So उसके साथ उनको benefit रहता है. This is a natural protection for females so that this evolution continues. But once the reproductive functionality goes off, weans off, then the risk becomes equal between men and women. And then the studies have, जो studies करते हैं उन्होंने observe किया कि हालांकि एज होते होते men में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमियां होती है, उसके साथ साथ उनका हार्ट अटैक का रिस्क भी ज्यादा होता है. हालांकि अभी अगर वो 50 इयर्स के बाद फीमेल्स को और मेन को अगर हम टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन अमर दे तो फायदा होता है या नहीं होता, अभी उसके बारे में उन लोगों को यूजुअली हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं देते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है. तो certainly, apart from reproduction, these hormones have influence on the heart and its vasculature, and also on the skeletal as well as musculature and their health. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इनसाइट सर. सो ये हमारे सभी दर्शकों को समझना जरूरी है, और खासकर एक सर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट हमें बताया, और विशेषकर जो महिलाएं हमें सुन रही हैं और उनकी उम्र 50 के आसपास है, तो ये सभी महिलाओं को ये इस चीज के लिए सतर्क होना होगा कि जैसे ही आपकी पीरियड्स बंद होते हैं, जो कि 50-45 एक हमारे देश में उसका एवरेज एज है, उस समय आपको और अपने हेल्थ, लाइफस्टाइल, बाकी चीजों के लिए सतर्क रहना है, क्योंकि उस वक्त आप ज्यादा खतरे में हो सकते हैं एक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आने में. तो हमें उस वक्त, जो कि सर ने हमें बताया कि कुछ हार्मोन्स हैं वो दिया जा सकता है, वो नहीं दिया जा सकता है, ये आपको अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलकर समझना है कि क्या हम कुछ हार्मोन्स ले सकते हैं उस वक्त अपनी चीजों को कंट्रोल करने में, अपने हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ और सारी चीजों को कंट्रोल रखने में, हेल्दी रखने में, या हमें अपने लाइफस्टाइल और इन सारी चीजों को ज्यादा फोकस करना है और उसके साथ साथ रेगुलर स्क्रीनिंग कराना है. खासकर जैसे मैंने कहा, महिलाएं, तो ऐसा नहीं कि हमारे पुरुष इफेक्टेड नहीं है. सर ने ये भी बताया कि पुरुषों को भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो हार्मोन्स की कमी हो सकती है, और उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना है. विशेषकर हमें अपने वजन का ध्यान रखना है. वजन बढ़ना, ओबेसिटी होना, जो कि एक हमारे समाज में कॉमन समस्या है, वो कई बार हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इफेक्ट कर सकता है. तो हमारी वजन को ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, और अपने
इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को हमें जहां तक पॉसिबल हेल्दी रखना है अपने ओवरऑल हार्ट को और ओवरऑल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए. Thank you, sir. Thank you for that wonderful insight. So, moving ahead, our audience must be thinking that yes, they are discussing about hormones, heart, they are telling about a lot of diseases, that yes, this can happen with the hormones. So, now my next question is to Dr. Kaushik, sir. Sir, is the conditions which we have discussed till now, are they curable once we pick them up, once we diagnose these conditions? Can they be cured, sir? Thank you, Boiva, for these pertinent questions. The beauty of treating hormonal disorders is that when we treat them properly, there is the majorly the conditions associated with them are reversible, and or at least they can be largely ameliorated. For an example, if we treat both hypo and hyperthyroidisms, then the effect of thyroid hormones on the heart is largely reversible. जहाँ तक कि एक सीरियस डिसऑर्डर लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन एक खतरनाक एरिथमिया है हार्ट का, वो भी अप टू 60% केसेस by treating hyperthyroidism we can treat it, we can reverse it. Similarly, if there is deficiency or excess of other hormones like in case of adrenal gland related hormones like Cushing disease, if we treat Cushing disease or other cases of cortisol excess, then at least in 70% of cases hypertension can be ameliorated. The bad effect of those hormones in the heart can at least be partially be treated. Similarly, if we treat other conditions like hyperaldosteronism, then again blood pressure can be completely treated, completely ameliorated in at least 50% of cases. बाकी केस में एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट होगा ब्लड प्रेशर का. हार्ट का ऊपर जो बुरा इफेक्ट है पूरा तरह तो नहीं जाएगा, लेकिन 70% केस में एटलीस्ट जा सकता है. सिमिलरली, इफ यू रिप्लेस ग्रोथ हार्मोन इन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट पेशेंट, हार्ट कंडीशंस आर लाइकली टू बी इम्प्रूव्ड. इन केस ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन deficiency, if we replace them correctly, so their effect on heart can be maintained. The good effect of those hormones in heart can be maintained. So the question is, treating hormonal disorders is very, very important in the context of heart health, which is largely preventable and as well as largely treatable. Thank you. थैंक यू सर. सो ये हमारे दर्शकों को निराश नहीं होना है अगर किसी तरह का आपको हार्मोन रिलेटेड कंडीशन डायग्नोस हुआ है या पता लगा है. जैसा कि सर ने हमें बताया कि मेजॉरिटी ऑफ समस्याएं जो कि बहुत सारी जो हार्मोन रिलेटेड कंडीशंस हैं वो कम होने की समस्या हो या ज़्यादा होने की समस्या हो, उसका हर संभव इलाज है जहां तक पॉसिबल हो. उससे आपको लगभग सर ने कहा कि 70-80% आपके सिम्टम्स में इम्प्रूव होगा. और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर चीज़ें सारी ठीक से डायग्नोस हुई, ट्रीटमेंट हुआ, तो चीज़ें 100% भी इम्प्रूव होने के chances रहते हैं. So I would just say it is very gratifying to treat any endocrine disorders if it has been diagnosed properly. So our patients who are getting diagnosed, who are having such conditions, they should not be disappointed. They should take proper treatment and take care of their overall health. So moving ahead, now as we have discussed that yes, these conditions are curable, and each any endocrine disorder or any endocrine problem we discuss with our patients or with in public forum, we always focus on diet and lifestyle. So in next few minutes we'd like to focus on those aspects. So now my next question is to Dr. Ranveer sir. Sir, keeping in the context of heart health, what dietary advices in you'd like to give it to our audience to keep our heart healthy, sir? थैंक यू भाई फॉर द क्वेश्चन. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नमक कम करना है, क्योंकि इंडिया में हम नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाना में भी डालते हैं और जो हम नींबू के साथ भी खाते हैं, हरा मिर्च के साथ भी खाते हैं, हमारे अचार में नमक है. तो हर खाने के वेराइटीज ऑफ फूड में नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो नमक कम खाना है. तो एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि नमक 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना है दिन का, मतलब इसमें 2.3 ग्राम सोडियम आ जाएगा, वो 1 चम्मच में 5 ग्राम में आ जाएगा, उससे कम खाना है. क्योंकि नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर का क्या क्या बुरा असर है हम लोग जान चुके हैं. हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, गुर्दे में खराबी आ सकता है. दूसरा है कि हम लोग को ज़्यादा फल बहुत ज़्यादा खाना है. फल वेजिटेबल्स जो फाइबर है
वो बहुत ज़्यादा खाना है। फल में वेजिटेबल में क्या है कि कैलोरी बहुत कम होता है। कैलोरी ज़्यादा खाने से वजन बढ़ेगा। जो भी कैलोरी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, जो कैलोरी ज़्यादा खाने से वजन बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कैलोरी फैट में है, इसलिए लोग ज़्यादातर फैट के बारे में बात करते हैं। लेकिन चावल ज़्यादा खाने से भी, रोटी ज़्यादा खाने से भी वजन तो बढ़ेगा, क्योंकि कैलोरी ले रहा है। whatever, जो जिस तरह भी ले रहा है कैलोरी तो ले रहा है। कैलोरी ज़्यादा लेने से वजन बढ़ेगा। तो वजन घटने के लिए फल या सब्जी खूब खाना है, क्योंकि उसमें कैलोरी बहुत कम होते हैं और जो इम्पोर्टेंट मिनरल से, विटामिन से सब मिलेगा। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग फाइबर ज़्यादा खाने, तो क्या क्या खाना है कि होल ग्रेन खाना है। होल ग्रेन मतलब जैसे कि आटा खाना है, मैदा नहीं खाना। मैदा रिफाइंड ग्रेन है। और ब्राउन राइस वो भी होल ग्रेन है। जो सफ़ेद चावल है जो हम लोग खाते हैं वो खराब है, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत कम है और ज़्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरा जो ऑयल है, तो उसमें से जो कौन सा खराब है कि हम लोग इसको मानते हैं, जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं वो सब खराब है। मान लो घी, बटर, इस तरह का चीज़ खराब है। और ऑलिव ऑयल तो महंगा है, लेकिन ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा मानते हैं। और सोयाबीन ऑयल वगैरह ये सब भी थी, अच्छा ऑयल है। राइस ब्रान, सोयाबीन ऑयल। और लिन पोर्शन वाला, मसल वाला मीट का पोर्शन खाना है, फैट वाला नहीं खाना है। और मछली अच्छा है। जो नॉन वेजिटेरियन है इसके लिए फिश, चिकन वगैरह, बाकी रेड मीट से बेहतर है। रेड मीट मतलब मटन वगैरह, बीफ वगैरह, वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और मीट खाने से हम लोग को ऑर्गन नहीं खाना है, जैसे लीवर वगैरह, वो सब नहीं खाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है। और और दूसरा है कि हम लोग नट्स वगैरह ज़्यादा खाने। नट्स में जो, और फिश का ऑयल में ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 से जो ट्राइग्लिसराइड बोल के लिपिड का एक पैरामीटर है, वो कम हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड से भी वो स्टडी से बताया गया है कि जो नेचुरल फॉर्म में जो ओमेगा 3 खाते हैं, उससे हार्ट अटैक में भी कम आ सकता है। जो सप्लीमेंट में, एक ही सप्लीमेंट में अभी तक जांच में पाया गया है कि उसे हार्ट का हेल्थ में बेनिफिट होता है। कि बाकी जो सप्लीमेंट है वो ओमेगा 3 उसमें से नहीं होता। जो इकोसाप पेन इथाइल, पता नहीं अभी इंडिया में आ गया कि नहीं, वो से तो स्टडी से पाया गया है कि हार्ट पे उसे फायदा होता है। बाकी सप्लीमेंट ओमेगा 3 का जो मार्केट में मिलता है उसे कुछ फायदा नहीं है। तो नेचुरल फॉर्म में नट्स में, जो फिश में है, वो अच्छा है। तो हम लोग नमक कम खाना है, सब्जी और फल खूब खाना है। जो वेजिटेरियन लोग, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, ज़्यादातर हम लोग उसको फिश को ज़्यादा खाना है, या पोल्ट्री या चिकन खाना है, लेकिन रेड मीट कम खाना है। और ऑयल में जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड वाला है उसको कम खाना है। Thank you, sir. Thank you for the answer, sir. And just to brief our patients and audience that yes, sir has taken that you have to keep a check of your overall calories. That whatever you are spending, you have to take that. Or if you want to reduce weight, take little less calories. Then overall, keep a check of eat lot of fibers, eat lot of protein, keep a check on the carbohydrate intake. So, moving ahead, sir, there are few interesting questions appearing in our chat box. I would like to ask Dr. Kaushik, sir, a few questions of that. Sir, there is audience who has asked the effect of endocrine tumors on the heart, sir. So, your comments on that, sir, please. Yeah, several endocrine tumors are associated with hormonal excess, like pheochromocytoma, which is a uh, chromatin cell tumor, which often secretes noradrenaline or adrenaline, and other hormones can also be secreted. Now, these tumors are associated with either paroxysmal or sustained hypertension and other devastating consequences like cardiomyopathy. And if we remove pheochromocytoma, the majority of the problems are solved, including hypertension and the bad effects on the heart, including arrhythmia. There are other tumors like aldosterone secreting tumor or aldosteronoma or cortisol secreting tumor. If we remove them correctly, or if we treat them correctly, then the effect of those hormonal excess on the heart are likely to be ameliorated almost completely, at least 70% in the
most optimistic estimate. And these are the tumors, mainly the tumors associated with adrenal glands, which have a direct effect on the heart. If you consider the other conditions like growth hormone secreting tumor, pituitary tumor like acromegaly, or the pituitary, the Cushing's disease, the ACT secreting pituitary tumor, then they can be related to the adverse cardiac conditions, which again can be managed if we are able to treat the tumor in the pituitary gland either by surgical excision or by applying medications. So these are the, and there are other conditions like carcinoids, which can secrete some hormones which are related to maybe related to hypertension and other adverse cardiovascular events. There are beautiful treatments for management of those conditions, and heart conditions related to those hormonal excess can nicely be treated. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the answer, sir. Sir, one more question has appeared, and that I would like to ask to Dr. Praveen Kumar, sir. Sir, the audience has asked us that what is the role of hormone replacement in prevention of cardiovascular diseases, and any specific role in regards to testosterone or the hormone replacement therapy in women, and any differences that whether it helps in one, it does not help in others, sir. Hormone replacement therapy was long back, like it was tried, but due to some of that studies which showed like some uh, not so conclusive remarks on its regular utility in every patient. So currently, hormone replacement therapy in postmenopausal women is not recommended, and in men, like only in patients like who are having hypogonadism, at that point like these men are given the replacement therapy. Unless proved otherwise, these patients are not given any replacement therapy for just because they're getting older, and by that like age related fall in the testosterone level will not be replaced, because studies have failed, whatever that they have done, the studies have failed to show that it is going to significantly improve or protect the cardiovascular disease. So currently, to conclude in one line, currently this is not recommended in all of our patients. Thank you, sir. So, thank you for the answer, sir. Now, moving ahead, I would like to ask the next question and to Dr. Abhyuday, sir. As Dr. Ranveer sir has already emphasized upon what diet our audience need to take to keep our heart healthy. So, sir, I would like to ask you that any specific exercise or the role of exercise overall in keeping our heart healthy. Yes, definitely, Dr. Vaibhav very well pointed out the details of diet by Dr. Ranbir. See, basically, if we talk about कि आज जो हमारे पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो सबसे जो डेडली बीमारियां मिल रही हैं वो है डायबिटीज और ओबेसिटी। और इसका मुख्य कारण जो है वी ऑल नो कि इट इज बेसिकली अ डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल, है ना। और इसमें हमारा जो है डाइट और एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इट इज नॉट ओनली हार्ट which gets benefited with a proper diet and exercise, lot of अदर बॉडी ऑर्गन्स, है ना। अब अगर मैं सिर्फ स्पेशलिटी हार्मोन्स के बारे में ही जैसे आज हम बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात करूं तो विथ एक्सरसाइज वी ऑल नो, है ना, बचपन से हमें पता है, हर व्यक्ति को पता है कि एक्सरसाइज करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में। और वो हैप्पी हार्मोन्स आर दी, you can say, the necessity nowadays. We all know we have been talking about lifestyles, but then lot of time कहीं ना कहीं हम तनाव को या स्ट्रेस को भूल जाते हैं। और यही एक्सरसाइज के द्वारा जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं वो उस तनाव को कम करने में मदद करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, एंड वी नो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से
काफी सारी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सभी कुछ हो सकता है। तो एक्सरसाइज तो बहुत ही जरूरी होती है ना। अगर हम कंडीशनिंग की भी बात करें कि ठीक है, हार्मोन बैलेंस में है, शुगर बैलेंस में है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में है, बट अगर हम रूटीन बॉडी की एक्टिविटीज कंडीशनिंग की भी बात करें, अबाउट योर जॉइंट्स, अबाउट योर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ, ये सारी रेगुलर एक्सरसाइज करने से बनी रहती है। एंड एज इज नो बार, है ना। आप अगर कोई एक 80 साल का व्यक्ति भी एक्सरसाइज करने के काबिल है, तो डेफिनेटली वी शुड एडवाइज देम दैट फॉर देयर ओवरऑल हेल्थ, नॉट ओनली हार्ट, एक्सरसाइज जरूर करें। एटलीस्ट यंग लोगों को मैं कहूंगा कि 30 to 45 minutes ऑफ इंटेंसिव एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 times इन अ वीक जरूर करें। और अदरवाइज आप चाहें तो ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट 5 kilometers डेली, या 30 से 40 मिनट डेली ब्रिस्क वॉकिंग आप हफ्ते में 5 या 6 दिन जरूर करें। और साथ में आजकल काफी सारी हमारी रिसर्चेज में भी ये देखने को मिला है, पीसीओएस की फीमेल्स में जिनको हार्मोन इम्बैलेंस है, कि योगा, meditation has also helped a lot in taking care of not only heart health, but जैसा हमने बात करी फीमेल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस हो गया, मेल में टेस्टोस्टेरॉन, अगर हम जैसे अगर आप बात करें तो बाजार में इतने सारे सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं विच हैव गॉट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कार्डियक हेल्थ। तो बाय इंप्रूविंग दीज हॉर्मोन्स, है ना, जब इन एक्सरसाइज के द्वारा इन सारे हॉर्मोन्स को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, और हॉर्मोन्स का काम ही वही होता है हार्मोनी बना के रखना। तो अगर वो हार्मोन की हार्मोनी बनी रही, तो डेफिनेटली नॉट ओनली हार्ट, the whole body can be benefited with the routine exercise. Thank you, sir. Thank you for that answer, sir. And just I would like to emphasize on the few points like which you have discussed, sir, especially with regards to male health. That yes, keeping a good diet as well as doing regular exercise keeps even our testosterone level at a very good level, even in old age peoples. And we all know that yes, overweight, obesity, जिन भी लोगों का मरीज लोगों का जिनका जिन भी पेशेंट्स का वजन ज्यादा होता है, we see them that their testosterone level have gone down, and that can have a negative impact on overall health. Along with that, as you have discussed, and there is I would like our audience that there is a dedicated discussion regarding diabetes and heart health. And as you have emphasized upon that, yes, diet and lifestyle, and especially the exercise part, it does help in keeping our insulin resistance down and subsequently keeping our sugar levels in check. So overall, keeping a good heart healthy, keeping our heart healthy, and especially to make a balance and keep a harmony of hormone with the overall health, we need to have a good diet. Along with that, a regular physical activity of at least 45 minutes, as pointed by sir. So with this, we are now coming to the end of our discussion, and I would like our each respected or panelist to give a few take him home message for our respected audience. So I would like to begin by asking Dr. Ranveer sir, your few lines of take home message for our audience, sir. Uh, as we have discussed, hormones play a very important role in our heart and for overall health. And most of the hormonal diseases in India can be easily screened if we go to an endocrinologist. Particularly, thyroid test is now freely available. हर जगह थायराइड का टेस्ट होते हैं. हम मजाक मजाक में भी बोलते हैं कि आजकल थायराइड का मशीन तो हजाम के पास भी होते हैं. इट्स सो वाइडली अवेलेबल. आराम से टेस्ट करा सकते हैं, और ट्रीटमेंट भी बहुत इजी है. थायराइड का ट्रीटमेंट हाइपोथायराइड का हो तो 1 रुपये से हो जाएगा. दिन का रोज का 1 रुपये 1.5 रुपये से इलाज भी आराम से हो जाएगा. तो अगर आपको हार्मोन का कोई भी बीमारी का शक है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाइए, टेस्ट करके. डॉक्टर कौशिक साहब ने भी बताया कि अगर ट्यूमर का भी इलाज करके क्योर हो सकता है. मेनी ऑफ द एंडोक्राइन ट्यूमर्स कैन बी क्योर. If we can't cure also, we can bring them under good control and we can lead a very healthy life. Another thing is that आप खाने में ध्यान रखिए, नमक कम खाइए, वेजिटेबल और फ्रूट्स बहुत खाइए.
एंड जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है वो कम खाना है, होल ग्रेन हो सके तो होल ग्रेन खाना है। Thank you, sir. Kaushik sir, your few lines of take home message for our audience, sir. Yes, thank you, Vaibhav. I just wanted to say our viewers that if you have any endocrinological problem, you should discuss about heart with your endocrinologist, because most of the endocrinological problems have some direct or indirect connections with your heart. So please discuss the matter. Thank you. Praveen sir, your take home message, sir, please. Yes. Uh, as we understood today, that multiple hormones will have an impact on the health of heart and its vasculature. Similarly, one single hormone will not have only one function, but it will have multiple functions on different gland, different organ system. So any variation needs to be addressed, and this is well manageable by most of us. So if any variations are there, kindly meet your endocrinologist. Thank you. Thank you, sir. Abhyuday sir, few messages for our audience, sir. Yes. No. I think the concluding remark मैं सबको एक एक बहुत ही सिंपल वर्ड में कहना चाहूँगा कि हैप्पी हार्ट के लिए हमको क्या जरूरी है। 4H फॉर हैप्पी हार्ट वी नीड हार्मोनी ऑफ आवर हार्मोन्स। 4H का मैं ये एक मंत्र देना चाहूंगा कि अगर आप अपने हार्ट को हैप्पी रखना चाहते हैं तो अपने हार्मोन्स की हार्मोनी को मेंटेन करके रखें। थैंक यू। थैंक यू सर। सो इन्हीं बातों के साथ हम अपना ये जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम है इसको अब कंक्लूड करना चाहेंगे। और इस पूरे मंथ मैं बताना चाहूँगा कि एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स लाइंड अप, एंड स्पेशली एज वी हैव touched few important points about the heart health and the thyroid part, as well as we have discussed few points about the diabetes insulin thing. But there are dedicated sessions because we know that thyroid and diabetes, it's a very common problem in our population. So there are dedicated sessions which are lined up in next week as well as the coming weeks, which will be focusing specifically on diabetes and heart health as well as thyroid and heart health. So इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी कार्यक्रम को हम कंक्लूड करना चाहेंगे। और इन लास्ट में मैं कहना चाहूँगा दैट कि अगर आपको कोई भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम डायग्नोस होता है तो उसका कहीं ना कहीं पे हार्ट पे जरूर असर पड़ सकता है। बट अगर पता लगता है तो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि लगभग मैं ये कहूँगा कि 95 से 100% बीमारियों का इलाज संभव है। और इलाज इस हद तक संभव है कि हम उस चीज़ को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, कई बार कई सारे मरीजों में क्योर भी कर सकते हैं। तो ये सबसे एक मैं कहूँगा कि कोई भी बीमारी पता लगना तो नेगेटिव जरूर ही है, लेकिन एक पॉजिटिव अगर एस्पेक्ट हम देखें तो हम हार्मोन्स की कंडीशन को ऑलमोस्ट अगर ठीक से करें तो क्योर कर सकते हैं। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड इफ यू आर गेटिंग डायग्नोस्ड विद एनी हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द conditions are treatable and manageable by the expert endocrinologist. So with this I would like to conclude and thank you everybody, thank you our respected panelists who have given their uh, time from their busy schedule, and thank you Endocrine Society of India for bringing us together and having this wonderful discussion. With this, thank you everybody, namaskar sabhi ka. थैंक यू Thank वैभव, you. थैंक यू Thank you. एंड Thank you.